गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएसटी इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस की है फेज्ड मैनर में, ताकि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं या इनवॉइस की रिपोर्टिंग जो होती है जीएसटी पोर्टल पर, वो आसानी से हो सके और स्टैंडर्डाइज हो सके। जीएसटी इनवॉइसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बी टू बी या एक्सपोर्ट इनवॉइसेज रिपोर्ट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के ई इनवॉइस पोर्टल पर वैलिडेशन के लिए। हर एक इनवॉइस को एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया जाता है। इनवॉइसेस जो है वो गवर्नमेंट नहीं जनरेट करती, बट टैक्स पेयर्स खुद जनरेट करते हैं अपने सिस्टम्स, और उसके बाद फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। इस सिस्टम के थ्रू सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज हो सकता है। इसको 37th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 2019 में इसको अप्रूव किया गया था, और इसको फेज मैनर में रोल आउट किया जा रहा है 2020 से। तो टैक्स पेयर जो है वो जनरेट करेंगे इन्वाइसेस अपने खुद के अकाउंटिंग, बिलिंग या ईआरपी सिस्टम से। फिर ये इन्वाइसेस जो है रिपोर्ट किए जाएंगे इन्वाइसेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। आईआरपी वैलिडेट करेगा इन्वाइस को और असाइन करेगा एक आईआरएन, एक क्यूआर कोड के साथ। और जीएसटी इन्वाइस जो लीगली वैलिड फिर हो जाएगा अगर उसके पास आईआरएन होगा तो इस जो इन्वाइस की डिटेल्स हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होंगी जीएसटी रिटर्न फॉर्म्स में और ई वे बिल्स में, तो मतलब मैनुअल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। डिस्प्यूट्स मिनिमाइज़ होंगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ रहेंगी, डिजिटल स्टोरेज होगी जब सारे फॉर्म्स की। पेमेंट साइकिल्स इम्प्रूव हो जाएंगी, तो बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक डिजिटली वेरीफिएबल ई इनवॉइस फॉर्मेट होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेस पर, और मशीन रीडेबिलिटी भी होगी इस बिल की या फिर इनवॉइस की। फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स इससे जो है प्रिवेंट हो सकेंगी। तो बिजनेसेस जिनका पहले एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ होता था या उससे ज़्यादा होता था, सिर्फ उन्हीं को ही ये ई इनवॉइस रिपोर्ट करने होते थे, बट अब उसको कम करके 10 करोड़ कर दिया गया है। तो 30 दिन के अंदर अगर आपने जो है वो ना रिपोर्ट किए तो वो इनवैलिड हो जाता है वो इनवॉइस। तो बिजनेसेस जो कि डिले कर रहे थे ई इनवॉइस को, वो अब नहीं कर पाएंगे, और आईआरपी ब्लॉक कर देगा इनवॉइस अपलोड को बियॉन्ड 30 डेज। और उसके बाद फिर पेनल्टीज़ और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया फाइनलाइज टर्म्स फॉर यूएस ट्रेड डील। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि 26% टैरिफ्स लगाए हैं यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी अदर कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए हैं रिसेंटली। तो इंडिया ने जो है वो एग्री कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ बिफोर दिस टैरिफ अनाउंसमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूएस के साथ। तो यूएस जो है वो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करता है। यूएसटीआर की रिपोर्ट ने कंसर्न्स रेज किए हैं टाइम एंड अगेन इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। तो यूएस क्लेम करता है कि लोकलाइज इंटरनेट शटडाउन्स करता है इंडिया, उससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो डिसरप्ट होती हैं। इंडिया ने मैंडेट किया दैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स से आने चाहिए, और उनको जो है उन एनिमल्स ने कोई ब्लड मील या इंटरनल ऑर्गन्स नहीं जो है वो कंज्यूम किए होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट यूएस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया कहता है कि जीएम फ्री सर्टिफिकेशन होनी चाहिए मिल्क की, पोर्क की और फिश इंपोर्ट्स की। रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम्स भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं। इंडिया के पल्स इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। यूएसटीआर रिपोर्ट जो है वो कंसर्न रेज करती है इंडिया के डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को के ऊपर भी, जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंक्स के लिए है। 2018 से आपको याद होगा कि आरबीआई ने मैंडेट किया है कि सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है डेटा, वो इंडियन सिटीजन्स का सिर्फ इंडियन लोकल सर्वर्स पे ही स्टोर किया जा सकता है। इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ के ऊपर भी, और कहा है कि यहाँ पर वीक ट्रेड प्रोटेक्शन और स्लो पेटेंट अप्रूवल्स हैं। और कई तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क में भी जो है वो कई तरह के इश्यूज़ फ्लैग किए गए हैं। यूएस ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के प्राइस कैप्स ऑन कोरोनरी स्टेंट्स और नीम प्लांट्स ऑल्सो। यूएस का टोटल गुड्स ट्रेड विद इंडिया $129 बिलियन के आसपास है, जिसमें यूएस का गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया के साथ है वो $45.7 बिलियन है। दोनों कंट्रीज़ प्लान कर रही हैं सेक्टर स्पेसिफिक नेगोशिएशंस करने को, ताकि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सके। यूएस ने ड्यूटी डिडक्शंस मांगी हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पर, ऑटोमोबाइल्स पर, वाइन्स पर, पेट्रोकेमिकल्स, डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। और इंडिया कंसेशंस चाहता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर जैसे टेक्सटाइल।
तो इंडिया जो है वो नेगोशिएट करेगा ट्रेड एग्जाम्पशंस टू अवॉइड सीवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, और इंडिया जो है वो कंपनीज को अट्रैक्ट करेगा जो चाइना को एग्जिट करना चाहती हैं। तो इंडिया ऑफ कोर्स यूएस को के ऊपर अपनी ट्रेड डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए अपने टाइज ईयू, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के साथ जो है इम्प्रूव करना चाहता है, और इवन न्यू मार्केट्स में एंटर करेगा इंडिया, ताकि मिनिमाइज हो सके रिस्क फ्रॉम यूएस ट्रेड पॉलिसीज़। यूएस के जो टैरिफ्स बढ़ रहे हैं चाइना के ऊपर, उससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने ऑपरेशंस को चाइना से बाहर निकाल कर इंडिया में भी ऑपरेट करना शुरू कर सकते हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स को इससे बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिपमर ने रिसेंटली एक सपोर्ट ग्रुप निकाला है पेशेंट्स के लिए जो कि आईबीडी से सफ़र कर रहे हैं। आईबीडी क्या है? ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो कि स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कर देती है टिश्यूज़ में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है आईबीडी में, एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ये कंडीशन में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोर्स हो जाते हैं जिनको अल्सर्स कहते हैं, अलॉन्ग द लाइनिंग ऑफ द कोलन एंड रेक्टम। तो इन दिस जो क्रॉन्स डिसीज़ होती है उसमें क्या होता है, लाइनिंग जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वो इन्फ्लेम हो जाती है। इस कंडीशन में ऑफ्टन जो है वो डीपर लेयर्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अफेक्ट होते हैं, और क्रॉन्स डिसीज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? सिम्टम्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस, और क्रॉन्स डिसीज़ में सब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिसीज़ है, दोनों में बेली पेन होना, डायरिया होना, रेक्टल ब्लीडिंग होना, एक्सट्रीम टायर्डनेस होना, वेट लॉस होना, ये सब जो है वो देखने को मिलता है। आईबीडी जो है वो एक वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। इम्यून सिस्टम इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड करने लगता है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स को, और ये कहा जाता है कि एक जेनेटिक जो है ये प्रॉब्लम है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन और सर्जरी से ही हो पाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिले। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और चिले जो है उन्होंने एक इनिशिएट कर दी हैं डिस्कशंस एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। तो अगर हम चिले के बारे में देखें तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, लॉन्ग नैरो कंट्री है, एवरेज विथ जो है वो सिर्फ 178 किलोमीटर्स की है। चिले के लेकिन पास जो है वो ईस्टर आइलैंड हो या फिर बाकी के पैसिफिक आइलैंड्स हो, उनके ऊपर सोवरेनिटी भी है। कंट्री जो है वो एक माउंटेनस टेरेन है, और डोमिनेटेड है एंडीज़ माउंटेन द्वारा। और ऑफ कोर्स यहाँ आटाकामा डेजर्ट है नॉर्थ में, जो कि ड्राइस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक यहाँ पर है ओजोस डेल सलाडो, जो कि एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है अटाकामा रीजन में। ये रीजन प्रोन है अर्थक्वेक को, सुनामीज को, वॉल्केनिक इरप्शंस को, ड्यू टू लोकेशन इसकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ती है। तो कॉपर माइनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिले जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का ग्लोबली। इवन लिथियम ट्रायंगल का भी पार्ट है ये। ओके, तो सैंटियागो इनकी कैपिटल है, स्पेनिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग यूरोपियन और इंडिजिनस हेरिटेज है इनकी, तो इसलिए ऑफ कोर्स स्पेनिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसको चिले को एक गेटवे टू अंटार्कटिका भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोग्राफिकली ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है अंटार्कटिका के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा ने रिसेंटली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 जो है वो पास कर दिया है, जो कि इंप्लीमेंट करना चाह रहा है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द लीजिंग ऑफ एविएशन इक्विपमेंट। तो ये बिल एम करता है इम्प्लीमेंट करना इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी बना है इन एग्रीमेंट्स का 2008 से, ताकि सिक्योर किया जा सके राइट्स ओवर हाई वैल्यू मोबाइल असेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स, ताकि ग्रेटर लीगल क्लैरिटी मिले और यूनिफॉर्मिटी मिले अक्रॉस द एविएशन इंडस्ट्री। तो क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स का एविएशन लीजिंग में स्पेस में जो है राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब ये बिल बताता है। बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेजिस्लेशन डेजिग्नेट करता है डीजीसीए को रजिस्ट्री अथॉरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कन्वेंशंस। तो रजिस्ट्री अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल होगी रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, और क्रेडिटर्स जो है उनको नोटिफाई करना होगा डीजीसीए को बिफोर इनिशिएटिंग एनी रेमेडीज़, अगर कोई डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन आती है। तो बिल जो है वो क्लैरिटी देगा, सिक्योरिटी देगा लीजिंग इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं
9K33 OSA AK मिसाइल सिस्टम, ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस वॉरियर्स जो है वाइट टाइगर डिवीजन के, उन्होंने अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रूव की है एक लाइव मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज में। तो ये 9K33 OS से AK मिसाइल सिस्टम रशियन बिल्ट हाईली मोबाइल लो ऑल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया 1960s में सोवियत यूनियन द्वारा, और 1972 में उसको उन्होंने फील्ड किया। एक क्रूशियल एसेट है बहुत सी आर्मीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया, और ये एक ऑल इन वन व्हीकल सेटअप है, और ये अलाउ करता है इसको कि डिटेक्ट कर सके, ट्रैक कर सके, एंगेज हो सके एरियल थ्रेट्स इंडिपेंडेंटली को, और न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसमें लगा है। एंगेज कर सकता है टारगेट्स को अप टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 12 किलोमीटर्स। फुली एम्फीबियस है, ये एयर ट्रांसपोर्टेबल है, और ये रेंज ऑफ टेरेन कंडीशंस में ये ऑपरेट कर पाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is GST in e-invoicing. This topic is important for our economy section. So GST Council of India has recently introduced e-invoicing in a phased manner to standardize business-to-business invoice reporting to the GST portal. And GST invoicing, e-invoicing refers to a system where B2B and export invoices are reported to the Union Government's e-invoice portal for validation. Each invoice receives a unique IRN, and invoices are not generated by the government, but they are created by the taxpayers in their own systems and then reported to the government. So this system enables seamless electronic data exchange through API integration. So this was actually approved in 37th GST Council meeting in September 2019 and was rolled out in phased manner starting to October 2020. So taxpayers generate invoices using their own accounting or billing ERP systems. Invoices but are reported to the IRP, and IRP, once it validates the invoice, it assigns a unique IRN with a QR code, and a GST invoice is only legally valid if it contains a if it contains a valid IRN. So invoice details are auto-populated into GST return forms and e-way bills. Therefore, it reduces time and manual effort. It also minimizes disputes and processing costs by ensuring digital storage of all forms. It also improves payment cycles, enhancing overall business efficiency. It uses a digitally verifiable e-invoice format based on international standards. It also allows machine readability and uniform interpretation across different platforms. Therefore, it also reduces fraudulent transactions by providing real-time access to data for tax authorities. So businesses which were having an annual aggregate turnover of 100 crores and above were meant to report these invoices to the IRP within 30 days of issuance. But now the uh, turnover has been turnover requirement has been reduced to 10 crore rupees. So with this lower turnover threshold, many more businesses will now comply with this rule. Businesses delay invoice uploads otherwise, but now IRPs will start blocking invoice uploads beyond 30 days, rejecting late submissions, and non-compliance may lead to penalties and financial consequences. The next topic is India finalizes terms for US trade deal. This topic is important for your international relations and economy section. We all know that recently, rather a few hours back, US has announced 26% tariffs on India. Apart from that, many other countries, I think 34% or 37% on China has also been announced. 29% for Pakistan has been announced. So, anyways, just before it was to be announced, these tariffs were to be announced upon India or other countries. India had agreed to the terms of reference for a bilateral trade agreement with the US. So, US has always been criticizing India's trade policy through USTR reports, which raised concerns over India's trade policies and considered it as a trade barriers, and considered trade barriers in India through its reports. So, US has claimed that internet shutdowns disrupt commercial activities. India also mandates that dairy products must come from animals and which have not consumed blood, meal, or internal organs, which US argues that it lacks any scientific justification. India requires GM-free certification for milk, pork, and fish imports,
which the US says it is not based on scientific risk assessment. The report has also raised concerns over India's agricultural support programs, claiming that they distort markets like the MSP. Okay, like we have MSP in India. It has also criticized India's pulse import restrictions as being opaque and unpredictable. The USTR report has raised concerns over India's data localization requirement for payment service providers and banks. Since 2018, the RBI has mandated that all electronic payment related data to Indian citizens must be stored on local servers only. And the US argues that this regulation was introduced without stakeholder consultation. India remains on priority watch list also due to weak trade protection and slow patent approvals. And this report has flagged multiple issues in India's IP framework also. US has also criticized India's price caps on coronary stents and knee implants, arguing that it discourages American manufacturers due to inflation and production cost concerns. US total goods trade with India is about 130 billion, and US goods trade deficit with India is about $45.75 billion. Both nations are planning sector specific negotiations to finalize a bilateral trade agreement. US is seeking duty reductions on industrial goods, automobiles, wines, petrochemicals, dairy, and agricultural products. India is pushing for concessions on labor intensive sectors like textiles. So India may negotiate trade exemptions to avoid severe economic impacts, and India could attract companies seeking to exit China. And India is, of course, at the same time deepening its ties with EU, Southeast Asia, and Africa, so as to reduce dependence on the US. India is also going to expand into new markets to minimize risks from the US trade policies. US tariffs on China could push many global manufacturers to expand operations in India. And apart from that, electronics, automobiles, and pharmaceutical sectors may benefit out of it. So the next topic is inflammatory bowel disease. This topic is important for your social issues. JIPMER has recently launched a support group for patients with inflammatory bowel disease. So what is IBD? It's a group of conditions which cause swelling and inflammation of the tissues in the digestive tract. So there are two most common types of IBD include the ulcerative colitis, which involves inflammation and sores called ulcers in the along the lining of the colon and rectum. Then we have Crohn's disease, which is the lining of the digestive tract gets inflamed. This condition often involves deeper layers of the digestive tract. Crohn's disease most commonly affects the small intestines. Symptoms of both ulcerative colitis and Crohn's disease usually include belly pain, diarrhea, rectal bleeding, extreme tiredness, and weight loss. The exact cause of IBD is unknown, but IBD is the result of a weakened immune system, and its possible causes are immune system responding incorrectly to environmental triggers. There also appears to be a genetic component. IBD is a chronic or long term condition, but there are treatments available to ease symptoms and prevent flare ups. IBD treatment usually involves either medicines or surgery. Okay. So the next topic is Chile. This topic is important for international relations. So India and Chile have initiated discussions on a comprehensive trade agreement which aims to enhance economic cooperation. So Chile is located in South America. It is a long, narrow country with an average width of about 178 kilometers. But it has sovereignty over Easter Island and other Pacific islands. This country is famous for its mountainous terrain, dominated by Andes Mountains. Atacama Desert is there in the north, which is the driest non-polar desert in the world. Then we have the highest peak here, Ojos del Salado, which is an active stratovolcano in the Atacama region. The region is prone to earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions because of its location on the Pacific Ring of Fire. Chile is the largest producer of copper globally, which is, of course, a key component in electronic devices, renewable energy systems, and electric vehicles. It is also part of the Lithium Triangle along with Argentina and Bolivia. Uh, its capital is Santiago. Its official language is Spanish. It has strong European and indigenous heritage. And why it is considered as a gateway to Antarctica? Because it is geographically proximate to Antarctica region. Okay.
So the next topic is protection of interest in aircraft objects bill 2025. This topic is important for governance and your economy section. Rajya Sabha has recently passed the protection of interest in aircraft objects bill 2025, which seeks to implement international conventions on the leasing of aviation equipment. So this bill aims to implement international agreements, particularly the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the protection and the Protocol on Aircraft Equipment. India became a signatory to these agreements in 2008. These international standards are designed to secure the rights of over high-value mobile assets like aircrafts, helicopters, and engines, so as to ensure greater legal clarity and uniformity across the aviation industry. The bill is designed to make these international agreements implementable so as to ensure that creditors and stakeholders in the aviation leasing space are protected. The bill empowers the central government to make rules to implement the provisions of these convention and protocol. It also designates the DGC as the registry authority for the purposes of these conventions. The registry authority is responsible for the registration and deregistration of aircraft. The key provisions of the bill also include requirement for creditors to notify the DGCA before initiating any remedies in the event of a default. The bill is expected to provide much needed clarity and security, particularly in the leasing industry. Okay. So the next topic is 9K33 OSA AK missile system. This topic is important for your security section. So Indian Army's air defense warriors from the White Tiger Division have proven their operational readiness and technical expertise during a recent live missile firing exercise, which involved the firing of this missile system. So this is a Russian-built, highly mobile, low altitude, short range tactical surface to air defense missile system, which was originally developed in 1960s, but it was fielded by the Soviet Union in 1972 only, and it has remained a crucial asset for many armies around the world, including the Indian Army. So it's a all-in-one vehicle setup combining the transporter, erector, launcher, and radar, enabling it to detect, track, and engage aerial threats independently. Vehicle can carry up to 5 crew members, and it is fitted with a nuclear, biological, and chemical protection system. It can engage targets up to a maximum range of 12 kilometers. It is highly mobile. It is fully amphibious, air transportable, and it is able to operate in a range of terrain conditions. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.